नमस्कार। आज 16 जुलाई 2023 को आज डॉक्टर के HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट में हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का और जो व्यूअर्स डॉक्टर के अग्रवाल जी के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है एक न्यू नोटिफिकेशन अभी जून में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया रिगार्डिंग ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो GCP है। उस नोटिफिकेशन पे लास्ट टाइम हमने इसी जुलाई मंथ में एक डिस्कशन किया था, डिटेल में प्रेजेंटेशन भी किया था और उसके बाद हमारे कुछ एक्सपर्ट ग्रुप थे, उनके कुछ कमेंट्स भी थे। तो उसका हमने जो रिकैप करते हुए उसके जो पॉइंट थे लास्ट मीटिंग के उससे स्टार्ट करेंगे। तो कामाक्षी यू कैन शेयर द प्रेजेंटेशन, उसके बाद फिर हमारे एक्सपर्ट मेंबर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा और साइज बढ़ा सकते हो तो देख लो अगर। या आई थिंक विजिबल है सभी को। कैन या सो ये हमारी मीटिंग 2 जुलाई 2023 को हुई थी। दिस इज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑफ इंडिया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशूड बाय MOFCC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट वाज द पार्ट 1 ऑफ द मीटिंग। तो जैसा कि जस्ट टू रिकैप करते हुए बता कि ये 26 जून को MOF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया टू प्रमोट मिशन लाइफ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, मिशन लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एंड इसको COP26 को जो ग्लासगो में हुई थी उसके बाद से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको मिशन मोड में लिया और इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ ये। और इंडिया में बहुत ही कई सेक्टर्स पे इस पे काम हो रहा है लाइफ पे, और इसका टारगेट है कि 1 बिलियन पीपल जो है इस पे जोड़ने का। सो ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ these principle or जो people. The objective of this green credit program are twofold. Firstly, to create market-based mechanism to provide incentive for environment positive action in the form of green credits. Secondly, to create mass awareness around environment positive actions and realize the vision of mission life through pro-planet people and entities. So that was the basically this program का जो मिशन था, इसी नोटिफिकेशन भी हुआ इसी बेस पे। इको मुझे तो नहीं आ रही, आई थिंक आई डोंट नो इको आ रही किसी को? अगर मुझे तो लगता कहीं से नहीं, आई थिंक कहीं से और से मुझे तो नहीं आ रही। त्यागी सर आप अपने में थोड़ा सा एक बार चेक कर लें, हो सकता है। सो दिस ग्रीन, हाँ आपके यहाँ से आ रही है सर? इन्हीं के यहाँ से आ रही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी 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 जी। सो दिस इज ग्रीन क्रेडिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट्स। अभी तक हम जो है CDM में जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हुई स्टार्ट हुई थी जो 2009-10 के आसपास, और उसमें बहुत से कार्बन क्रेडिट्स के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो दिस ग्रीन क्रेडिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट्स। बेसिकली कार्बन की रिडक्शन ऑफ द इमिशन, वेयर इज हियर इज द हाउ टू प्रमोट things which are lead to the environment protection. मतलब this is a very different objective that was. Or there will be a secretariat to the Ministry of Environment here in Government of India. It will have members from different ministries such as Finance, Jal Shakti, or many more. The Indian Council of Forestry Research, जो है ICFRE, this will be shall be the administrator of the program, और इसको कंट्रोल करेंगे। So India is the only country which is generating carbon credits. No, this particularly under the green credit program. No country has this scheme जो under जो है green credit. And stakeholders who are eligible for green credit include individual FPO, farmer producer organizations, cooperative forestry enterprises, sustainable agriculture enterprises, urban rural local body, private sector, industry and organizations. And 8 area activities have been identified for this credits can be
the tree plantation to promote activity for increasing green cover, water conservation, water harvesting, and water use efficiency savings, including treatment, use of water, wastewater, sustainable agriculture to promote natural and regenerative agriculture practices, and restoration of productivity, soil health, and the nutritional value. Waste management to promote sustainable improved practices for waste management, including collection, segregation, treatment. Air pollution reduction to promote measures for reducing air pollution and other pollution management activity. Mangrove conservation and restoration to promote measures for conservation, restoration of mangrove. Eco-mark to encourage manufacturer to obtain eco-mark label for their goods and services. Sustainable building and infrastructure to encourage the construction of building and other infrastructure using sustainable technology and material. तो आप देखिए जो 8 इसमें जो पॉइंट्स हैं, इनमें इंटायर जो है रेंज ऑफ दी जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस के मेजर्स हैं वो इंक्लूड हो जा रहे हैं इसमें. तो आई थिंक दिस इज ए वेरी कंप्रेहेंसिव एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस मेजर्स, जो कि बहुत से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत अनाउंस किए, बट इसको एज ए मिशन मोड में लेने का दैट है ये जो लाइफ के अंदर में, मिशन लाइफ के अंदर में. So that I think when politically it will be implemented throughout the country. और अगर हम इंडिया में भी अगर आप देखें तो अगर इतने से लोग, अगर इनका टारगेट जो कम से कम एटलीस्ट 80 करोड़ लोगों को जोड़ने का है, तो आई थिंक दैट विल बी ए वेरी वेरी ह्यूज टास्क फोर्स और काफ़ी इससे जो है अप्रोच रहेगी. This is the phased and interactive approach has been associated with the 2-3 activity from each area in the initial phase. मतलब दो रेंज बहुत है तो इसको more activity sectors will be added from the selected sectors. Methodology for generating green credits has been already defined. Threshold and benchmark will be developed for each activity for generating issue of green credits. To maintain the fungibility across sector, the environment outcome achievable by green credit activity will be based on the equivalent and resource equivalent parties, parity of scale, scope, size, and other, and will be considered the allocation of green credits. Government will develop digital process for the जैसे portals हैं. CPCB had developed various portal for the EPR and other things, and the government of India का Parvesh portal है environmental clearances on all activities के लिए. वैसे it will be the digital process for green credit program, including self-assessment of the eligible green credit activity, registration of the activity, issuance of green credits, monitoring a program like other EPR and other program will be similar kind of things. A green credit registry and electronic database of issuance, holding, transfer, and green credit will also be established. It will be maintained by an administrator or a credit agency. A trading platform shall also be established by trading service provider in accordance with the guidelines. Trading service provider shall perform green credit trading related functions. An online knowledge and data platform will provide transparency on the various type of activity being undertaken for reporting program under program, like sectoral achievement, best practices, information, capacity building. Green verifiers will be responsible for verification and submission reports of the green credits program. Both green credits and carbon can be earned for an activity. Normally, अभी हम carbon credits को earn करते हैं, but both can be earned. The co-benefit of availing carbon credits along with green credits is an appreciable move by government of India. However, this move might increase the risk of greenwashing. ये अभी still हमने last time भी बात की थी कि जो ground में होना चाहिए, वो because of this greenwashing में लोग जो हैं they will buy the certificate, but actual में green ground में नहीं हो सकता. This is the very very important to consider कि how the actual work in the ground is being done, not to just to like rich people can buy certificate and going like whatever the emissions are they are emitting, or the waste management not doing properly, and this was getting certificates. So greenwashing is very important that way. The concern around quality of monitoring, reporting, verification, MRB, environment market-based instrument, the carbon, it would be interesting to observe the challenges around this rigorous MRB framework, this monitoring for this gamut of environmental activity. A new project does not start abruptly because normally like EIA process में होता है entails great planning, discussion. There are many checks and balances. So any gaps identified being implemented can be rectified. So this is a good move. It will be to start with हो सकता है कुछ challenges आए, but definitely it can be rectified. Steering committee भी है. India में normally this is very very important to green credits के लिए because we should have around 33% ecological sensitive area which should be green.
but total forest area is only around 25%. So it's not only the forest, but also for the private area. So that will be encourage the private players to come in the. In agroforestry also, forestry is the only private area in which we have been successful in quite extent. We can do agroforestry in 20 million hectare of area. At present is being done in 10 to 15 million hectare. So 2/3 of the wood requirement of the, just last time there was some discussion point from the requirement from the Himachal, Uttarakhand is met by the other states. Like a benchmark and now fixed with the Green Credit program. The about 22.5 to 5% area should be hydrological within the land mass, and if area around the water body catchment area are made green, this will come up with the pocket, and then they will also green credit also. If we have administrative and political will along with technical skill, we will be leading carbon credit creator as well as a leading proper tender as what for the this as a whole for the green credit program green credit. The draft tool say the green credits can brought an environment conscious company. However, identification environment conscious company should be done very judiciously. It should not be just like simply a kind of other green investing area. Industry wanting to have a loan as a cheaper rate of interest for undertaking environment can buy green credits for undertaking environment friendly interventions. The trading platform will connect all players who is our supplier of the green credits threshold and benchmark will be developed by each green credit activity for generating additional green credit. Allocation of 1 unit of green credit in respect of each activity will be determined based on the environmental outcome achievable, equivalence of resource requirement, parity of scale, and scope, and other relevant parameters. Next one. We should move ahead with some optimism that not to be pessimistic. It is easy to reject. We should move ahead and we should think about the sustainability of the green credits. And we, for the because notification from date of issue in the June, that was the last week. So it's 60 days time giving for the to submit their suggestions, objection, or the whatever. So we are also working then. So the last time these participants were the list is here. So we discussed this and there is some observation we are given in this presentation also. So we'll close the presentation this now and we'll start discussion with the and whatever we can add on that and views, because some of the members were not present in the last meeting. So I'll request Dr. S.K. Tyagi sir to have their expert view. So what are their important suggestions that can be further Tyagi sir, over to Dr. S.K. Tyagi sir. Hello. Yes. Good morning, yes, everyone. Sir. Yeah. Yes, sir. Morning, sir. Morning. So I was not present in the last meeting. Sorry. Yeah. But this is very important topic. My camera is also not good. Yes, sir. Yes, sir. We can see in background. I mean, this is normally जो फिल्मों में होता था वैसे ही मैं देख सकता हूँ आपको फिल्मों में की तरह. I have ordered to buy an external camera. So but we can see and recognize that you are there. Okay. Thank you. Yeah. So the many of the schemes have been introduced in the name of the carbon credit trading and energy by the energy department also, and this is another scheme on green credit. So we have to see the fate of their implementation, how best they are being implemented, because the industries or their crusaders generally bring new schemes to save them from actually minimizing the carbon footprint. So they say that we will buy the carbon credits and we need not to control the carbon emission. So we have to see in that respect that how successfully these will be implemented and who is going to implement them, how these will be computed and how these will be audited to see the actual impact on the benefit to reduction of the carbon emission into the environment, rather than
transfer of the carbon emission from high generating units to the low generating units or the individuals. So my only view is that we should have proper execution plan, a very solid implementation infrastructure and standards, protocols to be incorporated in the rules or further execution. And a very important point from my view is the training or the skill development of the technical persons who will be verifying or accrediting the carbon credits. So how best they evaluate, assess, and grant these carbon credits, that will be the important part of the overall rules, which will be helpful in the implementation and getting success of these rules. Equally is the important the trading platform and system in the place. So this is now then execution agency also, because who will be the right person in the technical committee or the steering committee, whether they have the good composition from all the stakeholders, I don't know. So more clarity is required in the rules, I think. Yeah. So thank you very much, Dr. Thank you, sir. Thank you for your important views, because this is very important to have expert members in the technical or steering committee. Not only to have only the very top steering committee with the bureaucrat, it should be technocrats also. So this is very important suggestion and the important view, sir. Yeah. So thanks, sir, Tyagi sir. So now I'll request my another friends Radheshyam Tyagi sir, जो बिकॉज आज हम त्यागी जी से त्यागी हमारे फ्रेंड्स हैं सब लोग, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राधेश्याम त्यागी जी से, ये वाटर सेक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, वो बहुत काम किया है और यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड में ऑलमोस्ट करीब वेरी टेक्निकल टॉप पोस्ट पे रहे हैं, मेंबर ड्रेनेज, मेंबर वाटर, तो उनके बहुत एक्सपर्ट व्यूज हैं, पर्टिकुलरली जो वाटर सेक्टर में इसको लिया हुआ है, कैसे लोग जो उसको अवेल करेंगे ग्रीन क्रेडिट्स को, और क्या उसमें टेक्निकलिटी आ सकती है, अदर कोई इम्पोर्टेंट उनके सजेशंस हैं। तो आई रिक्वेस्ट राधेश्याम त्यागी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही त्यागी सर। हाँ अनम्यूट कर लें, बस अनम्यूट कर लें, म्यूट है अभी आपका। ओके 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 हाँ जी सर, जी सर। अब इको आनी शुरू हो गई। चलो सर कोई बात नहीं, इको में ही काम हो जाएगा। प्रॉब्लम इन माय एंड। नहीं कोई बात नहीं, इको में ही काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। एनीवे थैंक यू डॉक्टर अनिल, आई हैव बीन जॉइनिंग दिस important platform after say month or two, so thank you very much. This is a very important topic from the environment point of view, because it is going to improve the environment. There are 2-3 things from my end. Number one, there should be some clear guidelines how to get the green credit card credit. There should be some guideline, there should be some technological backup who can guide the persons or the beneficiaries
how it is had to be implemented, what should be the benchmarks also. Because there are some colonies who has already achieved some of the green card parameters, and if they participate in this activity, so what should be the ultimate benchmark? Where should they stand, and where they should be there to be become eligible for getting the green card credit. Number two, as rightly said by Dr. S.K. Tyagi, that there should be some proper monitoring committee of the technical expert. I have seen that many of the Supreme Court, these courts are engaging some panels or some committees which is headed by either retired justice or either retired IAS, and they don't know the technical pros and cons. So the committee should be headed by some technical persons of appropriate having expertise. Three, the last note but least, i- that is the sewage or the waste is considered as a waste. That, however, it is a asset. Waste is more valuable than the clear water, because clear water, if it is treated, it gives the drinking water only. If you treat the sewage, it gives three things. One is treated effluent that can be used for non-potable purposes. The second one is the compost manure, which can be used as a manure. Third is the gas, which can generate the power. So waste water is more important than the clear water. So we should not consider sewage as a waste. It should be considered as an asset, and it should also be incorporated in the green credit. If any utility is treating the sewage 100% on to the required standard, it should brought into the green credit also. So that I forgot. Uh, there are some sustainable development goals which were set up by UNO in 2000, I think 19 or 15. I forget to remember. They also set up the sustainable goal in case of the sewage treatment also. So that should be followed also. What should be the guidelines? What should be the parameters? And how should be achieved? And how what will be the parameters to guide them, to judge them that they have achieved that sustainable goal. Thank you so much. Thank you, Tyagi. Tyagi ji, in addition to, add that the recent problem of the like flood is happening in so many states, and if this program also include to get the grant created by state government who properly manage their rainwater and by storing or by recharging the groundwater, and so that the problem of this flood, I mean particularly very high flood, can be at least minimized to some extent that way. And particularly like in Delhi started the upstream storage, but sometime the particularly area for the storage is not sufficient, so it should be brought into the this green credit. So the state government also get the green credit if they manage the river properly. I mean by river water quality and rainwater harvesting in the upstream storage. This should be brought into this the green credit also by the state government or local body or the water body. This should be. Actually, Dr. Anil, it is a very complicated issue for going to the rainwater harvesting. Government is emphasizing on the rainwater issue at a isolation, at an individual level. Means that is a rooftop rainwater harvesting. Nobody is giving the heed to these guidelines. It should be taken up at a community level, at a large scale level. I have seen in the Bangalore that there is a colony, that is Sunlight Colony. They used to be inundated during the floods. What they have done at the local level, they have bored. They make the potholes inside the drains at the interval of say 30 meters. Entire flood water stores in that area, in that potholes, and it percolate into the to the groundwater.
So it has given a great relief to that sunlight colonies, and there is not even a single water is standing over there now. You can see over there at Bangalore sunlight colony. So similarly, we can do in the Delhi also, that in the stormwater drains which are exclusively for stormwater. First, it should be isolated from the sewage, of course. So we can construct the boreholes inside the drains at a regular interval. The water can seep into the ground, and that flooding can be reduced to some extent. Similarly, this rainwater harvesting should be done at the district park, ridge areas. It is a very big area, ridge areas. You can store plenty of water. Means 50% of the rainwater can be stored in the ridges only. In the stormwater district parks, there are so many areas where you can store the water in the ground. So that should be taken on in this green card, green credit program. Yeah. So my point is, whoever the agency, maybe the community, I mean colony, or the kind of a water supply agency is doing, or the municipality is doing, or the state government, they should, I mean, collectively come, and they can also claim green credit, particularly in this program. Yeah. So thank you, sir. So now I'll request, पहले मैं ऐसे वर्मा जी बहुत दिनों बाद जो है, और मेट्रो ने बहुत क्लेम किया है कार्बन क्रेडिट्स वगैरह में, तो मैं आज वर्मा जी से बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है। डीएमआरसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऐसे वर्मा जी। वर्मा जी, आप अपने को थोड़ा अनम्यूट करके एक बार जो है आज का जो पर्टिकुलरली है आपके व्यू हम सुनना चाहेंगे, बिकॉज आपने तो बहुत कार्बन क्रेडिट्स वगैरह में अर्निंग किया है, एंड आपकी मेथोलॉजी है, यूनिक मेथोलॉजी आपने डेवलप की और डीएमआरसी में। तो आपके व्यू क्या है इस पर्टिकुलर ग्रीन क्रेडिट्स में, आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं मेट्रो में डीएमआरसी को? ओवर टू ऐसे वर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर अनिल और सब लोगों को, जितने हमारे सीनियर साथी हैं सबको नमस्कार, सहयोगियों को नमस्कार। बहुत दिनों बाद मौका मिल रहा है। इनफैक्ट मैं लास्ट वीक वाली भी चाह रहा था ज्वाइन करना, बट आई कुड नॉट, और आज भी आई वाज लिटिल लेट इन ज्वाइनिंग। तो मुझे पता नहीं कि कहाँ पर ये किस डायरेक्शन में या कहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मैं हमारा जो अपना तजुर्बा है उसको मैं आपसे 5 मिनट के अंदर साझा करना चाहता हूँ। जी जी। तो है क्या डॉक्टर साहब कि ग्रीन पॉइंट्स या कार्बन क्रेडिट्स एक चीज है और उसको मोनेटाइज करना दूसरी चीज है, राइट? तो अगर हम ये सिर्फ कहते हैं कि हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी या हमने कोई और एनवायरनमेंट में कोई हमने योगदान किया और उसका हमें ग्रीन पॉइंट मिलेगा, तो ग्रीन पॉइंट तो मिल जाएगा, लेकिन उसको मोनेटाइज करना, यानी कि उसके एवज में पैसे मिलना, ये इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ठीक है, ये बिल्कुल अलग चीज है। तो जैसे हम बहुत सी चीजें रोजमर्रा में करते हैं जिससे एनवायरनमेंट को फायदा होता है, मतलब जो नुकसान होता है उसको मिटिगेट करते हैं इन डिफरेंट वेज, लेकिन उसकी एक एलिजिबिलिटी है, वेदर इट विल क्वालिफाई फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। तो इसको इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कॉलोनी कहीं कर रही है, कहीं किसी ने कुछ किया है, वंडरफुल वर्क अनडाउटेडली, लेकिन जब मोनेटाइज करेंगे तो उसकी प्रक्रिया है। नाउ अब प्रक्रिया क्या थी कि पहले एक यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आप सभी ने सुना होगा, UNFCCC जिसको बोलते हैं, वो एक संस्था है, उसमें सारे 192 मेंबर्स हैं, और उसमें फिर क्योटो प्रोटोकॉल आया, जिसमें एनेक्स 1 कंट्रीज थी जो रिच कंट्रीज थी और नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज थी जो रिच नहीं थी। तो हुआ ये था कि उसमें सबको पता ही होगा, बट मैं जस्ट एक मेमोरी के लिए याददाश्त को जॉग करने के लिए कह रहा हूँ कि वो एक कमिटमेंट पीरियड था कि साहब आप लोगों को, जो एनेक्स 1 कंट्रीज थी, उनको इतना अपना कार्बन एमिशन कम करने थे, वो कर नहीं पा रहे थे बिकॉज उसमें टेक्नोलॉजी बहुत उनको ज्यादा करनी पड़ती, महंगी पड़ती। तो उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया कि ठीक है, जो पुअर कंट्रीज हैं वो अगर कार्बन एमिशन को कम करती हैं तो उसको वो मान लिया जाएगा कि जैसे कि उसने किया है, वो एनेक्स कंट्री ने किया है, एनेक्स 1 कंट्री ने किया है, और उसका पैसा मिलेगा। तो 1 टन अगर आपने CO2 अगर आपने कम किया तो आपको 1 CER आपको आप क्लेम करते हैं, और उसकी वैल्यू शुरुआत में करीब $20 के से शुरू हुई थी, 17, 18, $20, फिर घटते घटते $7-8 आई, और अब तो खैर बहुत कम हो गई है बिकॉज अब तो कमिटमेंट और क्योटो भी खत्म हो गया है। तो वो कैलकुलेशन जो है एमिशन रिडक्शन का, वो होता है समथिंग कॉल्ड मेथोडोलॉजी,
मेथडोलॉजी होती है कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वो मेथडोलॉजी कोई भी बना सकता है अनडाउटली, लेकिन एक वहां पे मैथ पैनल होता है। मैथ पैनल जो होता है उसको रिव्यू करता है, और ये कौन सज्जन होते हैं जो उसको रिव्यू करते हैं? ये डिफरेंट कंट्रीज के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको नॉलेज डोमेन होती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हमने अपने लिए जो मॉडल शिफ्ट के लिए जो मेथोडोलॉजी बनाई डीएमआरसी ने, उसको जो मैथ पैनल ने इवेलुएट किया, तो वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स पर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग पर, इस तरीके के लोग थे जिन्होंने अप्रूव किया उसको। और वो ऐसा नहीं होता कि एक मेथोडोलॉजी आपने बनाई और एक पहली बार में अप्रूव हो गया, नहीं। हमारा अपना तजुर्बा ये है कि हम वी फेल्ड 2 times, 2 बार हमारी मेथोडोलॉजी रिजेक्ट हुई, 3rd टाइम देन इट गेन्ड एक्सेप्टेंस। तो वो मेथोडोलॉजी जो होती है बड़ी रोबस्ट होती है, बिकॉज उसमें क्या है कि कोई भी आदमी, कोई भी संस्था या कोई भी कंट्री आपको उसके एवरेज में पैसा देगी, तो दे हैव टू मेक श्योर कि जो CO2 इमिशन रिडक्शन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस वजह से उसमें बहुत प्रोसीजर्स हैं, यानी कि 2 तरीके से 2 बार वैलिडेशन होता है उसमें। पहले एक DPR बनती है, फिर उसमें वैलिडेशन होता है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर जब आपको क्लेम करने जाएंगे फिर अगेन उसमें वेरिफिकेशन होगा। तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। दूसरी बात इसमें यह है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपने अगर कुछ कार्बन पॉइंट्स लिए हैं और अगर उसकी मेथोडोलॉजी नहीं है क्लेम करने की, तो आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। दूसरा ये है उसमें कि जब आप मेथोडोलॉजी में जाएंगे तो उसमें दिक्कतें आती हैं बेसलाइन एस्टैब्लिश करने में। इस सब के पीछे सार क्या है? सार ये है कि बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो नहीं है ये। आपको कार्बन क्रेडिट्स के बाद अगर आपको पैसा चाहिए, तो यू हैव टू प्रूव दैट योर इन्वेस्टमेंट इज एडिशनल। उसको एडिशनैलिटी प्रूव करने के लिए कहते हैं। और एडिशनैलिटी जो है कई तरीके से प्रूव होती है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर था ये मतलब पहली बार इंडिया में हो रहा है, पहली बार उस कंट्री में हो रहा है, तो रिस्क एसोसिएटेड थी, फाइनेंशियल रिस्क थी। इस तरीके से ये बताया जाता है कि अगर हमने फला चीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ करी है, तो ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। इसको करने में जो हमें खर्चा आया है, उस खर्चे को हम कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू क्लेम कर रहे हैं। दैट इज द आइडिया। सो देयरफॉर सिंपली बाय डूइंग समथिंग एंड तो वो कार्बन क्रेडिट्स तो आप मतलब ग्रीन पॉइंट तो आप कहोगे, आप बहुत अच्छा हुआ, आपने यू डन अ वेरी गुड जॉब, बट देन इट इज नॉट पॉसिबल मतलब टू गेट मनी आउट ऑफ दैट ग्रीन पॉइंट, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। तो ये एक तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। और दूसरा अभी क्या है कि वो पेरिस एग्रीमेंट 2016 में आया, इट इज नॉट किक्ड इन 2021, 22, 23, और अब ट्रांजिशन फेज हो रहा है फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल टू पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट में आर्टिकल 6.4 है, जिसपे आज कुछ चर्चा चल रही है, और अभी मिनिस्ट्री ने भी कागज जारी किया है, जिस पे डिस्कशन चल रहा है। उसके पहले उन्होंने, जैसे अभी कोई साहब कह रहे थे कि एक्सपर्ट्स होने चाहिए। अनफॉर्चुनेट क्या हुआ है कि आप देखें कि उसमें BEE के जो ऑडिटर्स हैं वो ऑडिट करने लगेंगे क्लाइमेट चेंज के हमारे प्रोजेक्ट्स को। तो क्या एक्सपर्टीज है उनके पास? व्हाट डू दे नो? कोई ट्रेनिंग उनके पास नहीं है। तो ये जो बात हो रही है बिल्कुल सही हो रही है कि उनको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, उनको सब होना चाहिए। अब आई डोंट नो वो कब होगा, क्या नहीं होगा, बिकॉज ये सब साइलोज में होते हैं काम। और हमारे पास क्या आता है कि एक पेपर आ जाता है, भाई इसमें कमेंट करिए। अब वो कमेंट हमारी कई बार लेते हैं, कई बार ज्यादातर वो नहीं लेते। हमने बहुत सारे कमेंट उसमें दिए थे कि इस तरीके से होना चाहिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा और रोबस्ट मैकेनिज्म नहीं होगा, you will not be able to claim money from the carbon credits, from the carbon credits. This is important. दूसरा पॉइंट ये है कि अब पहले की तरह कुछ टारगेट्स कुछ कंट्रीज को दिए गए थे। इस बार everyone has got it, मतलब the entire world, every country has got some targets. उनको कुछ ना कुछ करना है। इंडिया का भी अपना कुछ टारगेट है। तो किस तरीके से ये कंप्लायंस मैकेनिज्म होगा? क्या पहले इंडियन गवर्नमेंट जो हम कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करेंगे, वेदर इंडियन गवर्नमेंट विल से नहीं पहले हमको आप दीजिए नेशनल टारगेट्स को, NDCs को पे हमको कंप्लाई करना है, तभी जो एक्सेस बचेगा वो उसको आप बेच सकते हैं। तो ये सब चीजें अभी थोड़ी फ्लूइड हैं। बट मेरा अपना मानना है, बीइंग एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, मेरा अपना ये मानना है कि रिगार्डलेस ऑफ कार्बन क्रेडिट्स और रिगार्डलेस ऑफ मोनेटाइजेशन, जो व्हाटएवर गुड वर्क दैट वी ऑल कंटिन्यू टू डू इन आवर एरियाज,
चाहे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, चाहे एनर्जी सेविंग करें, चाहे कुछ करें, चाहे एसटीपी से कुछ भी करें, आई थिंक दैट वी शुड कंटिन्यू टू डू। मोनेटाइजेशन का हो जाता है, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वी वुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी। दैट्स माय शॉर्ट पॉइंट। थैंक यू सो मच। Thank you, Verma ji. Very, very elaborate on this particular topic. और आपने तो जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, कोई मैकेनिज्म है तो इंडिया में देखिए अभी बेसिकली आई थिंक दैट वाज द ग्रीन क्रेडिट का मेन यही है, टू इनकरेज द पीपल एटलीस्ट रिकॉग्नाइज बाय वे ऑफ सम लाइक मे बी सम अदर वे, और इट कैन इंटरनेशनली मॉनिटराइज हो सकता है, तो दैट इज द गुड थिंग दैट, बट इंडियन गवर्नमेंट आल्सो कैन सम काइंड ऑफ incentive can be provided, right, to meet the NDC of the जो भी है नेशनल रिटर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया का जो टारगेट है। तो आई थिंक इसलिए दैट वाज दी उसमें 8 सेक्टर जो लिए हैं, और इसमें लोग अगर जाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज उसका तो इंडिया का तो मीट होगा कम से कम, जो टारगेट दिया है उसमें कम से कम जो है उसमें, और उसमें अगर हमें कुछ इंसेंटिव नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ जो भी पर जो है कार्बन ग्रीन क्रेडिट, अगर कुछ इंडियन गवर्नमेंट ही इंसेंटिव देती है, so that people will be encouraged to, and but work should be in ground. I mean, that is very important. We are discussing that way. So thank you, Verma ji, and definitely your important points will be taken for our this particularly recommendations. So अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ कुलदीप कुमार त्यागी जी हैं। आई थिंक कुलदीप त्यागी जी, आप अनम्यूट करके if you want to say some जो है, आपका म्यूट है कुलदीप त्यागी जी। आई थिंक का म्यूट है। और सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा देन नीरज त्यागी जी से, और दो हम लोग नीरज त्यागी जी ने हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बट जो वो तो बहुत पढ़ते, काफ़ी नीरज जी पढ़ते रहते हैं और काफ़ी रिसर्च की होगी, सो मैं डेफिनेटली उनके व्यूज जो एडिशनल हैं और वो सुनना चाहेंगे। ओवर टू नीरज त्यागी जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। मैं जैसे कि टाइम भी काफी हो गया है, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम है तो थोड़ी सी बातें, मैं जो ग्रीन कंसेप्ट है, ग्रीन कंसेप्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, ये डिफाइन किया गया कि द क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दैट यूज प्रोसेसेस that are non-polluting, conserve energy and natural resources, and are economically sound and safe for employees, communities, and consumers. Over the last few years, due to the impact of greenhouse gases, particularly carbon dioxide emissions, global warming, and climate change issues have become increasingly severe, attracting the attention of many countries. Green technologies, जो innovation है, it is considered to be an important means to achieve sustainable development. Technological change, financial liberalization, and globalization have reinforced the boundaries among countries on technological capabilities and competitiveness. And within the development of green management around the world, industry competition has become more complex and uncertain. The development of the majority of products and technologies is evolving towards a green structure. अभी आप होटल्स में भी जाएंगे तो वहाँ ग्रीन टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में कुछ स्लोगन लिखे हुए होते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट में भी. When planning commercial strategies, taking environmental impact into consideration has led to major changes in the social system and competition area. As a main consumer of resources and energy, heavy polluting enterprises are the main producers of environmental pollution. Heavy polluting industries, represented by electricity and steel, are pillar industries that drive economic development. However, they are also the main culprits of environmental problems. Heavy polluting companies should take active social responsibility and implement the concept of developing environmental protection. In the process of green transformation, green innovation should serve as a new perspective. हमारे कंट्री में क्या है कि इनोवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमारा जो पेटेंट होते हैं इनोवेशन में, वो बाहर के कंट्रीज की ज्यादा पेटेंट्स ग्रांट होते हैं. प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एड्रेसिंग एनवायरमेंट, तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं उनमें इनोवेशन की जरूरत है. और जो हैवी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो ये क्रेडिट सिस्टम है, वर्मा साहब भी कह रहे थे कि ये मोनेटाइजेशन कर रहे हैं,
लेकिन कार्बन क्रेडिट से क्या हो गया है कि ग्रीन वॉशिंग जैसी प्रॉब्लम शुरू हो गई. दे डू नॉट इन्वेस्ट इन एक्शंस टू अवॉइड एमिशंस because they are able to buy unlimited credits. In this case, the reduction of 1 ton of carbon, that is one credit, will never be enough, because in fact somebody will use this ton, so there won't really be an emission reduction. 2013 में जो पार्थदास गुप्ता कमेटी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, और defining the framework in such a way that the wealth of nation will be taken into account by subtracting the depletion of the natural resource. However, development of proper calculation of green GDP is still in progress. एक green GDP का concept लाए थे, जिसका अभी calculation होनी, अभी एक modality होना, वो अभी बाकी है. It will be crucial to ensure that the methodology and standards are robust, and additional strategies that would create enough demand for the green credits for the viability and stability of the market. And there is a need for a careful assessment and implementation of the green credit system, particularly its focus on tree plantation and afforestation. अभी एफॉरेस्टेशन में एक वो एक्ट में कुछ अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या रहा है कि जहां जहां हम फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना चाहें तो उसको टूरिस्ट प्लेस में भी कन्वर्ट करेंगे. तो उससे तो फॉरेस्टेशन में कोई एनहेंसमेंट नहीं होगा. ये एक बहुत बड़ा एक एनालिसिस की फील्ड है कि क्या वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउ करनी चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर अनरिजॉल्व फॉरेस्ट ओनरशिप and governance rights, ecological and biodiversity challenges, and global critics of carbon credit scheme. Carbon credit scheme तक का criticism हो रहा है, तो ये green credit जो हमारा system ला रहे हैं, ये कितना successful होगा. Internal discussions and public consultation are most important to address these aspects. जो greenwashing refers to the practice of making false or exaggerated claims about environmental sustainability or achievements to create a positive image while not actually delivering significant environmental benefits. The fear is that companies or entities may engage in tokenistic or superficial activities to generate green credits without making substantial efforts to address environmental issues. There are also concerns about the effectiveness of these mechanisms in achieving urgent emission reductions and the allocation of resources for monitoring and fraud prevention instead of more transformative efforts directed by the government. And also experts are concerned that the market-based mechanism of green credits may lead to greenwashing. ये पहले आपने भी डिस्कस किया है. इसमें और भी हम जो कार्बन क्रेडिट के बारे में, जो कार्बन मार्केट्स और ट्रेडिंग के बारे में जो क्रिटिसिज्म है, वही ग्रीन क्रेडिट में भी क्रिटिसिज्म रेलिवेंट है. एंड देयर इज नीड फॉर केयरफुल असेसमेंट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर अनरिजॉल्व्ड फॉरेस्ट ओनरशिप एंड गवर्नेंस राइट्स, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी चैलेंजेस. बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ. या तो नीरज जी, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए वेरी क्लियर एसओपी. बहुत क्लियर है कि एसओपी की जरूरत होगी और बहुत ही क्लियरिटी की जरूरत होगी. और वर्मा जी का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी अगर एक्शन चाहेगा, उसको अगर मॉनेटरी बेनिफिट है तो वो बहुत और अच्छे से करेगा. तो सम काइंड ऑफ जो मॉनेटरी बेनिफिट है या इंसेंटिव है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर. कैसे रेगुलेट होगा और क्या इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में होगा. तो इस तरह से ये बहुत से इशूज हैं. अभी मतलब एक आई थिंक टू इनिशिएट दिस नोटिफिकेशन है, बट इसमें तो मैं सोच रहा हूँ कुछ एक पेपर आपको मैं मेल कर दूंगा, तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल. और स्टडी करके नहीं, वो तो मैं सभी से रिक्वेस्ट है कि, और मैंने कल भी ग्रुप में डाला था कि अगर व्यूज हैं थोड़े से क्रिस्प, अगर आपके को भी आज डिस्कशन में तो हमने किए हैं, कोई और मतलब पॉइंट्स हैं इसी को, अगर आप अपने जो है मे बी दो चार हेडिंग है, दो चार एक वन पैरा भी अगर कोई भेज देंगे सब लोग तो इसको करेंगे. और अब हम जो है अगर कुलदीप जी हैं, रेखा श्रीवास्तव मैडम हैं, अगर कुछ अनम्यूट करके अगर कोई बोलना चाहें. आई थिंक पॉइंट नहीं है लग रहा है मुझे. तो दो
आज कुछ लोगों का मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए, दे आर सम स्टिल आउट ऑफ, जो है कोई टूर पे हैं, कोई कहीं पे हैं, तो बहुत से लोग ज्वाइन। साहा जी भी नजर नहीं आ रहे। हाँ नहीं, शाह जी का भी है कि दे आर ही इन टूर, मैसेज आया, विवेक जी का आया, द्वारका नाथ का भी आया। सो मेनी पीपल आर दी, जो पहले आना था उनको, बट आई थिंक संजीव जी थे, आई थिंक वो चले गए, संजीव कुमार जी नारी सस्टेनेबिलिटी से। और बट एनीवे वी हैड डिस्कस्ड लास्ट टाइम, और आज हमने डिस्कस किया। इसके त्यागी जी ने भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कोई भी अगर हम इस तरह के प्रोग्राम में, चाहे वो स्टीयरिंग कमेटी हो या टेक्निकल कमेटी हो, और ये पॉइंट्स हैं, जब तक इसमें टेक्नोक्रेट्स नहीं होंगे तो हम कोई भी इम्पोर्टेंट जो है इसमें आगे प्रोसीड करना हमारे लिए, मतलब ऑन ग्राउंड बड़ा मुश्किल होगा। और उसकी जो है वैल्यूएशन एंड जो वर्मा जी का जो मेथोलॉजी है कि इसको कैसे आपको एडिशनलिटी, बिकॉज ये बहुत सी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर जो रूल में है तो दैट इज, दिस इज योर ड्यूटी टू डू दैट। फॉर एग्जांपल अगर एयर एक्ट में आपको एयर एमिशन कंट्रोल करना है, और वाटर एक्ट में आपको वाटर वेस्ट वाटर को ट्रीट करके डिस्चार्ज करना है, स्टैंडर्ड मीट करने हैं, बीओडी सीओडी एंड अदर पैरामीटर्स, तो उसके बियॉन्ड कितना अगर उसको इंसेंटिव में आएगा, कितना आपकी ड्यूटी है, रूल रेगुलेशंस आल्सो, तो वो एडिशनलिटी इसमें है कितने लेवल पे रहेगी, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉर एग्जांपल अगर न्यू प्रोजेक्ट है, इट्स ऑलरेडी कवर्ड इन द ईआईए नोटिफिकेशन, और उसमें आपको सर्टेन जो है ईआईए की एनवायरमेंट क्लियरेंस कंडीशंस आपको मेट करनी है, तो दिस इज एज पर रूल योर ड्यूटी इज देयर, योर ऑब्लिगेशन इज दैट एक्चुअली। सो बियॉन्ड दैट अगर आप क्या कर रहे हैं, एडिशनलिटी कर रहे हैं, जो 8 जो आपके सेक्टर्स दिए हैं इसमें, तो उसमें आपकी जो है, अदरवाइज तो इज ए काइंड ऑफ बिजनेस एज यूजुअल, बिकॉज एज पर लॉ यू आल्सो रिक्वायर्ड टू डू दैट, you cannot pollute, this is not, you cannot, because environmental law also say that you cannot pollute the environment. So I think additionality to define it बहुत जरूरी है। और किस बेंचमार्क, उसके लिए जो आपकी क्या बेसलाइन होगी, उस बेसलाइन के बियॉन्ड आप जाएंगे तो आपको जो है कोई अगर मॉनिटरी बेनिफिट है, कोई इंसेंटिव है या रिकॉग्निशन है, किस फॉर्म में होगी, दीज आर वेरियस पॉइंट टू बी डिस्कस्ड पर्टिकुलरली टू नेक्स्ट, जो इसका जो फर्दर एसओपी वगैरह बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सो दैट कि ये जो आपका डिजिटल पोर्टल पे और लोगों को कैसे उसको करना है, कैसे क्लेम करना है, बिकॉज दिस अवेयरनेस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने वी हैड वेरी डिटेल डिस्कशन इन दिस पॉइंट पे। आज एडिशनलिटी कोई और किसी को पॉइंट, अगर जो ऑलरेडी हमारे त्यागी जी ने, एसके त्यागी जी ने, आरएस त्यागी जी ने और वर्मा जी ने, इन एडिशन को अगर कुछ नहीं है तो हमें वी कैन जस्ट कंक्लूड टुडेज मीटिंग। और जो अगर कोई भी किसी के फर्दर पॉइंट हो, सिंपली मुझे व्हाट्सएप पे अगर पॉइंट लिख के भेज देंगे तो आई जस्ट, दो हमने लास्ट टाइम वाले कंपाइल किए थे, सो अगर इसको दो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, विल डू दैट। बट इफ यू वांट टू से एनीथिंग, व्हेन टू वांट टू सेंड, मुझे ग्रुप में डाल दें तो आई विल डू दैट। सो विद दिस आई थिंक वी कैन क्लोज लिटिल अर्ली, नो इशू दैट। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के सहयोग से डॉक्टर जो के अग्रवाल जी की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर के HCFI, डिफरेंट सब्जेक्ट पे हम लेते रहते हैं, जो करंट इश्यूज हैं, करंट टॉपिक्स हैं, जिनमें हमारे सब एक्सपर्ट मेंबर्स के व्यूज होते हैं, और ये जो इसकी बनते हैं कंपाइल करके, ये एक मेडिकल के फील्ड में तो जाते ही है रेगुलर, और पहले हम तो गवर्नमेंट में भी बहुत भेजते थे पहले, लेकिन कोई एक्शन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए हमारा एक मेडी न्यूज़ इनका जो है होता है, निकलता है, तो वो जितने भी उसकी नॉट ओनली मेडिकल के, नॉन मेडिकल लोगों को बहुत उसकी रीच है, तो हम बाई मेल से डॉक्टर बीना अग्रवाल जी मैडम भेजती हैं उसके कंपाइल करके, और सबको जाता है वो। तो विद दिस वी थैंक्स एवरीबॉडी एंड विल नेक्स्ट जो हमारा जो मीटिंग होगी, बिकॉज हम अल्टरनेट संडे कर रहे हैं, तो उसमें न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।